द चाइल्ड विल स्वॉलो। अब निप्पल का दूसरा एंड बॉटल में नहीं है, ओपन है, तो क्या स्वॉलो करेगा? इसको मैकगोवन्स टेक्निक कहा जाता है। सो इतने सारे पॉइंट्स का ये बताना था कि वी आर ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर्स, वी लर्न हाउ टू टेक इन एयर थ्रू आवर माउथ। Even the adults, 80% of the time they breathe through nose, and only during certain conditions like in exertion, exercising, or in some pathological conditions like nasal obstruction per se, we breathe through our mouth. तो अगर कोई माउथ ब्रीदिंग कर रहा है आपके सामने, आपके घर में, आपके आसपास कोई बच्चा, तो दैट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन. You will have to find the cause of it. It is not a normal condition. ठीक, बच्चों में कॉमन मिलता है नोज ब्रीदिंग, ये माउथ ब्रीदिंग, ओपन माउथ ब्रीदिंग. तो क्या क्या कॉजेज यू कैन थिंक ऑफ? सिंपल कॉजेज. एनीथिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग द नेजल एयरवे, क्या हो सकता है? एक टॉपिक हो चुका है तुम लोग का, वॉनिटी सबसे कॉमन. बच्चा, infants. Yes, the most common is adenoid hyperplasia. ठीक, क्योंकि where does the adenoid what is its location? Nasopharynx. Suppose अगर एक adenoid nasopharynx को मतलब बड़ा साइज का है and it's blocking the nasopharynx, it is occupying the nasopharynx completely, that means nasopharynx का anterior wall में क्या होता है? posterior near squana, है ना? तो that will be blocked. तो most common क्या है? adenoid hyperplasia in children. ठीक, अब adenoid hyperplasia अगर है, एक तो उसका माउथ, तो आप क्या देखना चाहोगे कि बच्चा जो है whether most of the time or during sleep the baby is breathing through his or her mouth or not, mouth open during sleep. अच्छा, अगर एक बच्चा माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसके माउथ में क्या फीचर्स आएगा? बोलो, ठीक बोल रहे, बोलो क्या बोला? पार्शियली ओपन नहीं, दैट डेंटिशंस विल बी जैक्ड, इरेगुलर. ठीक, ये टंग है हमारा, that molds our hard palate, and जो hard palate है हमारा, it is molded by our tongue as we grow up. The molding action of the tongue will be absent. क्यों? क्योंकि उसका माउथ खुला हुआ है. So that will lead to arching of the hard palate. तो high arched palate will be there. ठीक है, तो अगर कोई माउथ ब्रीदिंग वाला बच्चा है, आपने नोटिस किया, कहीं भी नोटिस किया, ठीक, कि उसका मुंह खुला हुआ, सांस ले रहा है, तो आप उसका दूसरा क्या नोटिस करोगे? उसके डेंटिशन कैसा है. अगर डेंटिशन है तो कैसा है, और उसका पैलेट कैसा है. पैलेट क्या होगा? हाई आर्च्ड होगा, एक्सेस कॉन्वेक्सिटी, सॉरी कॉन्केविटी. ठीक, अगर आर्चिंग हाई है, डेंटिशंस एबनॉर्मल है, तो हाई प्रोबेबिलिटी इज देयर कि उसका एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया हो सकता है. वन ऑफ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस. ठीक, सो नोज इज अ नेचुरल पाथवे ऑफ ब्रीदिंग, माउथ ब्रीदिंग इज एक्वायर्ड. सो व्हेन वी ब्रीद इन, through which part of our nose the maximum air flows? Broadly speaking, inside the nose, what is there? Central septum is there. There are scroll-like projections called as the turbinates, and below every turbinate, the area is called as meatus, respective meatus. ठीक, इन दोनों के बीच में एक पैसेज है. ठीक, सेप्टम, लेटरल वॉल में टर्बिनेट्स, टर्बिनेट्स और सेप्टम के बीच में एक पैसेज, और बिलो ईच टर्बिनेट meatus. क्लियर? माय क्वेश्चन इज कि जब हम ब्रीथ कर रहे हैं,
तो कौन सा पार्ट ऑफ दिस एंटायर सिस्टम इज एक्टिव, मोस्ट एक्टिव? ओनली द एरिया बिटवीन द मिडिल टर्बिनेट एंड द इंफीरियर टर्बिनेट, मतलब मिडिल मीएटस से सबसे मैक्सिमम एयर फ्लो होता है एंड द एडजॉइनिंग नेसल पैसेज। ठीक, ना ही सुपीरियर टर्बिनेट या सुपीरियर मीटस की तरफ जाता है और ना ही इंफीरियर मीटस की तरफ जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर मिडिल मीटस में जो जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, अगर उसमें कोई हाइपरट्रॉफी है या उसमें कोई एनोमली है, तो दैट विल कॉज मोस्ट दिस नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के सबसे ज्यादा फीचर्स कॉज करेगा। ठीक, इफ देयर इज सम पॉलिप और सम स्वेलिंग इन द सुपीरियर मीटस and the patient is complaining of nasal obstruction, so this obstruction is not due to that thing. It will be there somewhat, but अगर बहुत severity है तो that will not be because of that thing. आपको किसी और चीज के लिए देखना होगा। ठीक है, so humans are obligate nasal breathers for 6 months. Adults 85% are natural nose breathers. Mouth breathing is pathological. There is something called as nasal airway resistance. ठीक है, what do you mean by this? The air we breathe in and breathe out, it is going through many structures, and it has certain velocity. बहुत तेज हम जब इनहेल कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर है, मतलब क्या बोला इसने? वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज अगर कहीं पे होता है, उसके सराउंडिंग प्रेशर अगर इंक्रीज है, तो वहां पे क्या होगा? कोलैप्स होगा। सिंपल। तो जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है सबसे कम होता है, ठीक है, एंड ब्रीथ आउट करते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अब क्या रेजिस्टेंस है और कहाँ पे ये हो रहा है? नेजल जो पाथवे है दैट इज नॉट एंटायरली सेम, उसके डायमेंशन सेम नहीं है। इट इज नैरो एंटीरियरली एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग इन एरिया पोस्टीरियरली। ठीक है, तो जो सबसे नैरोवेस्ट पार्ट है, ठीक है, तो वहां पे जो है रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा वेरी करेगा। ठीक, तो समथिंग कॉल्ड एज एक्सटर्नल नेजल वैब दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ द वेस्टिबुलर एरिया, दिस एंट्रेंस, एंड समथिंग कॉल्ड एज इंटरनल नेजल वैब। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था तुम लोग से, तो दैट इज जस्ट इनसाइड इट। इसका एनाटॉमिकल लैंडमार्क होता है कि जो इंफीरियर एंड ऑफ द anterior end of the inferior turbinate, conjugate part of the septum and upper lateral cartilage का lower part, ठीक है, this area comprises of what? Internal nasal wall. What is the significance of it? यहाँ पे सबसे नैरो हो जाता है नेजल कैविटी। नैरो होने की वजह से इस एरिया में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, थोड़ा से छोटा प्रॉब्लम भी हो, it can lead to a lot of symptoms. एंड ड्यूरिंग सर्जरी विल हैव टू टेक अल्ट्रा प्रिकॉशन कि इस एरिया का जो एरिया है वो गलती से भी हैम्पर ना हो, क्योंकि थोड़ा सा भी हैम्पर होने से सिम्टम्स ऑगमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों एरिया की वजह से नेजल एयरवे रेजिस्टेंस वेरी करता है। So factors affecting the nasal resistance: age, posture, drugs, temperature of the surrounding air, emotional psychological problems, endocrinological disorders. Okay. So during inspiration, this is taken from Dhingra only. During inspiration, this is inspiration, this is expiration. The air goes in, passes maximum through this area,
turbinate, middle turbinate and the middle meatus area and goes to the nasopharynx. तो ये जो flow है, this is called as laminar flow. This flow is laminar flow. ठीक है? During expiration, what is happening is the flow is getting turbulent. ठीक? Why? Because of this nasal valve, internal nasal valve, there is a higher resistance there. तो जो exhalation जो हो रहा है वो उस एरिया में जाके प्रेशर चेंजेस हो रहे हैं, उसके वजह से वहां पर टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है. प्लस these turbinates, they offer a resistance. That's why जब हम इनहेल करते हैं, फ्रेश एयर गोज इन एंड एक्सहेल जब कर रहे हैं, तब दिस टर्बुलेंट एयर गोज इनटू द साइनसेस. So aeration of sinuses occur during expiration. This was also asked. ठीक? क्यों होता है ये? क्योंकि पहला टर्बुलेंस, ठीक है, सेकेंड प्रेशर. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टर्बुलेंस. ठीक है? ड्यू टू टर्बुलेंस ऑफ द एयर जनरेटेड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, the aeration of the sinuses occurs during expiration. ठीक? So what is this term, nasal cycle? नाम क्या बोल रहा है? nasal cycle. It is a cyclical thing. This every one of us experience sometime or the other. ठीक है? बहुत टाइम ऐसा होता है कि ऑल्टरनेट नोज ब्लॉक हो जाता है. फिर आप स्पेशली स्लीप के टाइम पे जब हम लेटे हुए रहते हैं, so it is a physiological process. It is not a pathological process. It happens in almost everyone. Alternate closing and opening of alternate side of the nose. तो उससे क्या होगा और होता क्यों है? इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नेजल साइकिल का कितना ड्यूरेशन होता है. यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है. अंडर 4 आवर्स होता है, 2 to 4 आवर्स होता है. ठीक? एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सर्टेन कंडीशंस में ये ज्यादा होने लगता है, जैसे कि ये सब एलर्जी, इन्फेक्शंस, इमोशंस, ठीक है, एक्सरसाइज, हार्मोन्स, प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल एक्टिविटी. So one of the function is protection of lower airway. तो हमने कहा filtration. तो what part of the nose filters the things out? क्या क्या चीजें? Every one of us has hairs in their nose. That is called as vibrissae. Okay. So वो क्या करता है? That filters up to size of 3 micrometer size of things. 3 माइक्रोमीटर. ये साइजेस पूछा जाता है, कितना कितने पे क्या क्या कर रहा है और कितना साइज के बाद फिल्ट्रेशन नोज के थ्रू नहीं हो पाता है. तो अप टू 3 मीटर माइक्रॉन्स के साइज तक नेजल हेयर्स करते हैं. 0.5 to 3 माइक्रॉन्स तक जो साइजेस होते हैं उसको नेजल क्या सेकंड क्या है? नोज के अंदर क्या होता है? नोज इज अ मॉइस्ट स्ट्रक्चर ना, इनसाइड. तो क्या होता है, किस चीज के लिए मॉइस्ट होता है? वो एनाटॉमी तो पढ़ाया गया है. तो क्या क्या होता है अंदर? म्यूकस ग्लैंड्स होता है एंड गॉबलेट सेल्स होते हैं. तो दैट मॉइस्चर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस. तो दैट म्यूकस इज अ स्टिकी थिंग. इट ऑल्सो फिल्टर्स आउट द डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल अप टू साइज ऑफ 0.5 micron. Anything less than that will not be filtered out. It can reach the lungs. ठीक है? तो फिल्ट्रेशन हुआ. अब आते हैं जो एयर हम ब्रीद इन कर रहे हैं उसके कंडीशनिंग पे. सो आवर बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस एंड सपोज वी आर लिविंग इन अ वेरी हॉट इन्वायरमेंट. अभी 46-47 हो गया था.
तो क्या वही एयर लंग्स में जा रहा है, या हम ठंड में जब यहाँ पे 7-8 हो जाता है तो वही एयर लंग्स में जा रहा है? नहीं। तो वो कैसे गर्म हो रहा है, कैसे ठंडा हो रहा है? दैट इज डन बाय द ब्लड फ्लो टू द नोज. नोज इज अ वेरी 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 वैस्कुलर स्ट्रक्चर. ठीक है, थोड़ा सा भी इंजरी विल लीड टू बहुत ज्यादा ब्लीड. तो हाउ डज दिस हैपन? बताओ, एनी आइडिया? नोज के अंदर जो टर्बिनेट्स है, व्हाट इज द यूज ऑफ दोस टर्बिनेट्स? सरफेस एरिया बढ़ा रहा है. सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, इसका मतलब इट इज प्रोवाइडिंग मोर सरफेस फॉर द ब्लड टू एंटर. ठीक, तो इसीलिए जब ठंड में एयर बाहर ठंडा होता है, वी आर गोइंग थ्रू बाय अ बाइक, वी रीच आवर डेस्टिनेशन, तो क्या होता है नाक से उस समय? सब वाटरिंग होने लगता है. होता है? होता है कि नहीं? क्यों होता है? नोज ब्लॉक हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि उतना वॉल्यूम ऑफ एयर को, उतना ठंडा एयर को इंस्टेंट 37 करना पड़ रहा है. उसके लिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो पंप इन हो रहा है नोज के अंदर. उसकी वजह से जो है नेजल ब्लॉकेज होता है. और चूंकि म्यूकस ग्लैंड भी सुपर एक्टिव है उस समय. क्यों? क्योंकि वो एयर, जब ठंड में जो एयर होता है 7-8 डिग्री का, वो क्या होता है? इट इज ड्राई. उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 50%. ठीक, तो उसको मॉइस्ट करना है. हाँ, एयर कंडीशनिंग में फिल्ट्रेशन है, टेम्परेचर रेगुलेशन है एंड ह्यूमिडिफिकेशन है. 3 चीजें हैं. तो उसको मॉइस्ट भी करना है. तो उसके वजह से म्यूकस ग्लैंड सुपर एक्टिव होते हैं उस समय, इसीलिए नेजल डिस्चार्जेस होने लगते हैं. ठीक, अब समझ में आया कि ठंड में क्यों हम लोग ज्यादा वाटरिंग होता है ऑन एक्सपोजर ऑफ कोल्ड एयर. ठीक, हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रेगुलेट्स द ह्यूमिडिटी एंड एडजस्ट इट अराउंड 80%. 75 to 80% relative humidity is required for nose to function properly. ठीक है, अगर ज्यादा ड्राई एयर होगा तो क्या होगा? म्यूकस ब्लैंकेट जो है वो ड्राई हो जाएगा. और अगर म्यूकस ब्लैंकेट ड्राई हो गया तो नोज हैज व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम? सूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड, नॉन केराटिनाइज्ड तो है ही, सूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. ठीक, तो सीलिया है. सीलिया क्या करता है? इट बीट्स. ट्राई टू स्पीक. बोलोगे नहीं तो टर्म्स नहीं पता चलेंगे. इट्स बीट्स टू एंड फ्रो. सो द सीलिया बीट्स. इट बीट्स टू एंड फ्रो. मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक, जस्ट लाइक स्विमिंग. उससे क्या होगा? दैट स्ट्रोक्स दैट विल प्रोपेल द म्यूकस ब्लैंकेट. सपोज करो नोज में इस मोमेंट में ब्लैंकेट है पूरा म्यूकस का. आई मूव इनटू अ डस्टी सराउंडिंग. सारा जितना भी मैं वहां पे जितने देर भी था, मान लो 1 मिनट था, सारा उसने एब्जॉर्ब किया, सारा फिल्टर किया. तो अगर वो ब्लैंकेट वहीं का वहीं रह गया तो वो ब्लॉक हो जाएगा कि नहीं? तो दैट इज वाई these cilia beat and they move the blanket from anterior side to posterior side. और ये होता रहता है. The mucus is being secreted by these glands continuously and the cilia are beating and moving this blanket posteriorly. ठीक है, नया ब्लैंकेट सामने बन रहा है, उसको posterior पुश किया जा रहा है. तो this is called as conveyor belt mechanism of movement of this mucus inside the nose. ठीक, तो इसके लिए सीलिया बीट करता है 2 फॉर्म में. वन इज कॉल्ड एज रैपिड इफेक्टिव स्ट्रोक एंड द स्लो रिकवरी स्ट्रोक. अगर हम म्यूकस का माइक्रो स्ट्रक्चर देखें तो म्यूकस इज नॉट अ यूनिफॉर्म थिंग. इट हैज अ थिक जेल लाइक लेयर एट टॉप एंड इन बिटवीन इज अ सीरस लेयर. ठीक है, तो ऊपर जेल होता है, बीच में सॉल होता है.
gel, top, in between is sol, that is serous layer. So this effective stroke, जो सारा powerful है, that happens in the gel layer, that traps everything, that is heavy. And the recovery जो slow phase है, भाई सामने जाएगा तो पीछे आएगा तब ना से सामने जाएगा, just like swimming. So the recovery phase occurs in the sol thing, the serous layer. The mucus has two layers, top gel and below is sol. तो पहले क्या है, सीलिया का हेयर्स है, हेयर्स के ऊपर सॉल लेयर है, उसके ऊपर जेल लेयर है. ठीक, ये सीलिया जब बीट करेगा तो इट विल पुल इट लाइक दिस, इसको पुल करके फिर रिकवरी होगा, फिर पुल कर, जस्ट लाइक स्विमिंग, वैसे करके सीलिया मूव करेगा. ठीक है. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इन डिसऑर्डर्स विच आर हैविंग डिसऑर्डर्स ऑफ द सीलियरी मोशन. ठीक, एग्जाम्पल ऑफ दोज डिसऑर्डर्स एनीबॉडी नो? वेरी गुड. और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक, बहुत कॉमन है. तो उसमें सीलियरी मोशन हैम्पर्ड हो जाता है, तो उसमें सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन के साथ उसका एक बहुत बड़ा सिम्टम रहेगा रिकरेंट नेजल ब्लॉकेज का. आप ढूंढोगे सब ठीक है, या तो पेशेंट प्रेजेंट ही कर सकता है बार बार कि मेरा नेजल ब्लॉकेज हो रहा है, तो आपने देखा कि एनाटॉमिकली तो भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्सेसिव क्रस्टिंग हो रहा है. क्यों हो रहा है? इन सब वजह की वजह से हो सकता है. ठीक है. अच्छा, तो जो ब्लैंकेट जब गया पोस्टीरियर नेयर्स में, तो वहां पे क्या है, नेजोफेरिंग्स है. तो नेजोफेरिंग्स में गया वो ब्लैंकेट, ग्रेजुअली जा रहा है, फिर वहां से कहाँ जाएगा? वी स्वॉलो इट बेसिकली. ठीक है. This is the superficial thick mucus layer is gel and the deep thin mucus layer is sol. So this picture represents the same thing what I told you. This ये जो mucus है इसमें serous layer है, this will move, the effective stroke will pull this like this, then recovery will happen, then again pull it like this, then recovery will happen. Another important thing is, what is the length of a nasal cavity in adults? Anatomy question. बोलो. 8 सेंटीमीटर. कभी भी ना रिजिड नहीं होना चाहिए, रेंज बताना चाहिए. 8 to 10 centimeter. Okay. So in adults it is around 10, 8 to 10 centimeters, 10 centimeters. ठीक है. And the mucus blanket, it moves at a speed of 0.5 to 1 millimeter per minute. So how much time it will take for the entire blanket to speed क्या है? 0.5 to 1. वो 10 सेंटीमीटर का, तो कितना टाइम लेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले एमसीक्यू में, लिखा हुआ है 10 to 20 minutes. इसका मतलब every 10 to 20 minutes the entire thing gets changed. अगर इसमें हैम्पर है तो भी आपको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स आ सकते हैं. ठीक है. और ये कब हैम्पर होंगे? इन कंडीशंस में, पॉल्यूशन, स्मोकिंग, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ये सब कंडीशंस में जो है ये हैम्पर होंगे. स्मोकिंग में कैसे हैम्पर होगा? वेरी कॉमन. दोज हु आर पोस्टेड इन ईएनटी क्लिनिक्स, ऑलमोस्ट एवरी अदर पेशेंट हियर इज chronic smoker. So the cilia will beat at a rate of 10 to 20 times per second, and the speed is around 0.5 to 1 millimeter per minute. So the entire thing will get replaced in every 10 to 20 minutes. This is a normal physiology. Physiology में आपको न्यूमेरिकल्स पता होना चाहिए. ठीक है, पूछा जा सकता है. The mucus secreted by these glands, they are rich in certain these things. That is why they are also filtering against the bacterial and viral contaminations. So they are rich in lysozyme,
contains IgA and IgE. They have interferons also, and they contain certain glycoproteins. So these are the reflexes we were talking about. One is sneezing. Sneezing acts as, it is a protective reflex. Something should not enter the lower airway. That's why we sneeze. It is a protective mechanism. Appetite, good smell of food. Nasopulmonary, nasobronchial reflexes, they help in lung function. So, अगर एक बच्चा है जिसका chronic nasal obstruction है due to adenoid hypertrophy or tonsillar hypertrophy or some anomaly inside the nasal cavity, you will have to be very careful कि उसका lung function कैसा है. ठीक है, उसको बहुत chances है if it stands for long time, then that can go into pulmonary hypertension. But the beauty is once you relieve that symptom, जहाँ पे obstruction है, the lung function will return and this pulmonary hypertension also gets resolved. Okay? So very important function, olfaction. Okay? So which part of the nasal cavity is related to olfaction? रूफ या अपर 1/3. अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें तो द अपर 1/3. अब उसमें क्या क्या सब स्ट्रक्चर्स हैं? द क्रिब्रिफॉर्म एरिया, द एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द सेप्टम एंड द लेटरल कार्टिलेज, दोनों सारा. ठीक, ये तीनों चीजें मिलके जो है ऑल्फैक्टरी एरिया बनाते हैं. ठीक, सो like I said, when we are breathing normally, majority of air is not reaching there. ठीक है, तो ऐसा quite possible है कि कभी कोई एरोमा, सपोज करो ये परसीव कर पा रहा है और ये परसीव नहीं कर पा रहा है नॉर्मल ब्रीदिंग कंडीशन में, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका एनोमलस है. हमें भी कोई अरोमा मिलता है तो व्हाट डू वी डू? जोर से अंदर खींचते हैं, स्निफिंग करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर जो है हम सुपीरियर तरफ डाइवर्ट कर पाए. ठीक है, अब समझ में आया क्यों ज्यादा जोर से स्निफ करते हैं जब कुछ अच्छा अरोमा जब मिलता है. ठीक, regulates, the functions are to regulate the food intake and perception of flavor and palatability. Protective function detects detection of toxins and noxious substances. Okay, can anybody tell what are the primary tastes? Like primary taste हमारा होता है क्या क्या है? Salt, sour, sweet, bitter. Everybody knows. Primary smell, से तो पूछा था इनको, तो कोई बताओ कितने होते हैं? फर्स्ट 7. वेरी गुड. क्या क्या होता है? 7 तो बहुत हो गया. 7 कैसे याद करोगे? मस्क और लिख लो, कैम्फोरेशियस, मस्क, फ्लोरल, pungent, putrid, ethereal, कितना हुआ? and peppermint. एक ही बार बोलूंगा फिर से. कैम्फोरेशियस, musk, floral, putrid, peppermint. So these are the primary smell.
एक चीज याद रखना है कि हम जब भी स्मेल को टेस्ट करेंगे, टेस्ट नहीं, टेस्ट, ठीक है, ड्यूरिंग आवर क्लिनिकल एग्जामिनेशन विल हैव टू टेस्ट द स्मेल आल्सो। तो हम जो नॉर्मल चीजें उसको स्निफ करने को देते हैं, एंड वी आस्क द पेशेंट वेदर ही और शी इज एबल टू अप्रिशिएट इट और नॉट। ठीक, तो हम कभी भी उसे ऐसा सब्सटेंस नहीं देते हैं जिसमें अमोनिया हो। ठीक है, ये बाय एंड लार्ज याद रखो कि पंजेंट चीजें जिसमें अमोनिया है उसे हम स्मेल टेस्ट करने के लिए नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑल्फैक्टरी पाथवे को स्टिमुलेट नहीं करता है, वो डायरेक्टली ट्राइजेमाइनल पाथवे को स्टिमुलेट करता है, तो इसीलिए हमें फॉल्स इंप्रेशन मिलता है उसमें। ठीक है, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज है, अगर एमसीक्यू में रहे तो अमोनियकल सब्सटेंस नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब ये पाथवे कैसे है, हाउ डज द स्मेल पाथवे वर्क? olfactory cells are there at the roof of the nose। जो odor substance है वो वहां पे गया, उसे स्टिमुलेट किया। olfactory cells से olfactory उसके axons जो हैं, olfactory neurons क्यूबिफॉर्म प्लेट के थ्रू गए और olfactory bulb में पहुंचे। ठीक, olfactory bulb has some cells called as mitral cells। ठीक है, उनके जो axons हैं वो जो है उस स्टिमुलस को they'll take it to the cortical area। अब कौन सा cortical area इन्वॉल्व है इसमें? प्री पायरिफॉर्म कोर्टेक्स एंड एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, ब्रॉडबैंड एरिया 27, 28 एक बार कंफर्म कर लेना। सो अब आते हैं कुछ इसके क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस पे। So when the patient complains he is not able to smell, so what is that condition? Osmia relates to smell, so no smell is anosmia। Okay, decreased smell is hypoosmia। In what conditions it is seen? सबने फेस किया उसको, कोल्ड, वेरी गुड, और है नेजल कंजेशन, हाँ तो कोल्ड ही तो हुआ। और एनी एनाटॉमिकल एनोमली दैट इज हिंडरिंग द पैसेज ऑफ एयर टू दैट एरिया, जैसे डीएनएस, वेरी गुड, और टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी या नेजल पॉलिप। ठीक, ओके, these are the causes of hypoosmia। Any other osmia you know? Parosmia। Parosmia is altered smell, perversion of smell। ठीक है, तो अगर फ्लोरल स्मेल है तो उसको कुछ और लगेगा, मस्की लगेगा, इस तरीके से। एनी अदर स्मेल डिसऑर्डर? कैकोस्मिया। व्हाट इज कैकोस्मिया? Every odor will smell bad। And another osmia is there, phantosmia, that is fantasy of smell। odor नहीं भी है तो उसको odor लग रहा है। ठीक है, तो perversion of odor that can happen in some clinical conditions। ठीक है, ये जो पाथवे है दैट इज इजीली अफेक्टेड इन वायरल इलनेसेस, कोविड। ठीक, तो जब उसके बाद जब हीलिंग होता है सिस्टम का तो उसमें मिसडायरेक्टेड फाइबर्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है, उसके वजह से परवर्जन हो सकता है, एक कंडीशन। दूसरा, अगर किसी को स्मेल डिसऑर्डर है तो नोज के साथ साथ हमें ये भी उसमें एक्सक्लूड करना है कि उसके एंटीरियर क्रेनियम में कोई
स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन तो नहीं है, ठीक है। जैसे जब हम हियरिंग डिसऑर्डर्स करते हैं तो वी गो सिस्टमेटिकली ना, कि एक्सटर्नल ईयर में है, मिडिल ईयर में है, इनर ईयर में है। इनर ईयर में है तो इनर ईयर अपैरेटस में है या न्यूरल पाथवे में है। हर चीज का अलग अलग टेस्ट है, बोथ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक। तो उसी हिसाब से हमें इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स, दोज आर ऑक्यूपाइंग द एंटीरियर क्रेनियम, ठीक है, वो भी माइंड में रखना होता है। तो वायरल इलनेसेस एंड ट्यूमर्स में ये मिल सकता है, प्लस नेजल जो डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस किए वो तो है ही, ठीक है। ओके, अब वोकल रेजोनेंस, एक वन ऑफ द फंक्शन वाज इट हेल्प्स अस टू स्पीक। तो हाउ डज इट हेल्प टू स्पीक? A part of the voice what we are speaking out goes out through the nose also, ठीक। फॉर इंस्टेंस बताओ कौन कौन से वर्ड बताए थे? एम, एन, नाक बंद करके बोलो एम। निकल रहा है एम किसी का नाक बंद करके? हाँ, तो सर्टेन वर्ड्स स्पेशली सिंगर्स, इन सब में इसका बहुत रोल है। हाँ, वोकल रेजोनेंस थ्रू नोज एंड द पैरानेजल साइनसेस। तो अब इसका क्लिनिकल इसमें आते हैं कि वोकल रेजोनेंस किन कंडीशंस में इफेक्ट होगा। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, बेयर सिंपल, बेयर बेसिक, कोई भी ऐसा चीज जो पार्ट ऑफ द जो वॉइस इज व्हाट, एयर, है ना। तो एयर को अगर नोज में जाने ना दे, जो हमारा लंग से होके, वोकल कॉर्ड से होके जो हमारे ओरोफेरिंग्स में आ रहा है, तो ओरोफेरिंग्स से माउथ से निकल रहा है और पार्टली नोज से निकल रहा है। तो कोई भी अगर ऐसा एनोमली जो एयर को नोज में ना जाने दे ओरोफेरिंग्स से, उन सारे कंडीशंस में या तो नेजल सप्लाई बढ़ सकता है या तो नेजल सप्लाई कम हो सकता है। तो नेम अ फ्यू कंडीशंस इन विच दिस नेजल सप्लाई इंक्रीजेस। इसका मेडिकल टर्म है राइनोलैलिया अपर्टा, हाइपर नेजालिटी, ठीक है। तो नेम अ फ्यू कंडीशंस। वेरी गुड, सिंपल। नेजोफेरिंग्स में ज्यादा जा रहा है, इमेजिन करो किस कंडीशन में जाएगा। अगर नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के बीच में जो एरिया है, हाँ, उसके थ्रू अगर ज्यादा जाना है तो उस एरिया को ही एनलार्ज हो जाना पड़ेगा, या जो एरिया को कंस्ट्रिक्ट करके रख रहा है वो उसी स्ट्रक्चर में कोई एनोमली हो। तो वो एरिया किस किस चीज से बनता है? सॉफ्ट पैलेट से बनता है, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल से बनता है, ठीक। तो अब इन चीजों में अगर कोई एनोमली हो तो क्या हो सकता है? सॉफ्ट पैलेट का क्लेफ्ट, सॉफ्ट पैलेट डाइवर्जेंट है, एयर लीक करेगा, तो क्लेफ्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, या अगर हार्ड पैलेट में लीक है तो माउथ से ही एयर चला जाएगा नाक में, क्लेफ्ट ऑफ हार्ड पैलेट। या सॉफ्ट पैलेट है लेकिन काम नहीं कर रहा है इन सर्टेन न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, उसका पॉलिसी हो गया है, वहां के जो मसल्स को सप्लाई कर रहा है नर्व, तो उसको कहते हैं वेलोफेरेंजियल इनसफिशियंसी। तो इन सारे कंडीशंस में मोर एयर विल गो इनसाइड द नेजोफेरिंग्स, तो उसको क्या हो जाएगा? हाइपर नेजालिटी हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि सब कुछ नाक से ही बोल रहा है, ठीक। तो इसका वोकल रेजोनेंस का क्लिनिकल इंप्लीकेशन ये है कि अगर ये हैम्पर होता है तो हाइपर नेजालिटी हो सकता है एक कंडीशन, एक हो सकता है हाइपोनेजालिटी। हाइपोनेजालिटी मतलब एयर जा ही नहीं रहा है नोज में, तो कौन सा कंडीशन हो सकता है एक बताओ? एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी, सिंपल। इसलिए बच्चे जब एडिनॉइड वाले होते हैं, जिनका बड़ा होता है एडिनॉइड, तो उनका बात जब करोगे ना तो उसको बहुत दिक्कत हो रहा है, उसके तुम टोन से ही पता कर लोगे कि ये एन वाली चीजें, एम वाली चीजें ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है। विल आस्क द बच्चा टू से दीज वर्ड्स, नहीं बोल पाएगा, ठीक। तो एक हो गया हाइपर नेजालिटी, एक हो गया
हाइपोनेजल क्या हो गया है? कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द पैरानेजल साइनसेस. सो व्हाट आर द पैरानेजल साइनसेस वी नो ऑफ? बताओ. फ्रंटल, यहाँ पे इथमॉइड, ठीक है, इनसाइड बिल्कुल पीछे की तरफ स्फिनॉइड एंड मैक्सिलरी. ठीक है. अब बिना स्लाइड देखे ये बताओ कि इन साइनसेस का क्या फंक्शन हो सकता है? कंडीशनिंग चैम्बर, वेरी गुड. मतलब जो एयर कंडीशनिंग हो रहा था उसका एरिया वाइड, क्योंकि इतना वॉल्यूम ऑफ एयर को कभी कभी ज्यादा भी लग सकता है, बहुत जल्दी करना हो. ठीक, तो एक कंडीशनिंग चैम्बर हो गया. और रेजोनेटिंग चैम्बर, वेरी गुड. बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम नेजल जो वॉइस निकल रहा है उनके रेजोनेंस के लिए भी ये सारे साइनसेस जरूरत होते हैं. ठीक है. एनीथिंग एल्स? मैक्सिलरी बोन लाइटर, इसका क्या इम्प्लीकेशन है? और कोई फंक्शन? इंटर, जोर से बोलो. कनेक्शन बिटवीन बोन्स, उससे फंक्शन क्या होगा? देखो यहाँ पे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है इन साइनसेस के चारों तरफ? क्या है? कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर? आई है. ठीक है. अब ये सोचो कि हम एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस नोज में हो रहे हैं, इतना डेलिकेट स्ट्रक्चर उसके बगल में है. हाँ, तो वो भी तो हैम्पर हो सकता है. आई का जो ये सामने का पार्ट है, स्क्लेरल कंपोनेंट जो है, इसके ऊपर क्या है? कंजक्टाइवा है, स्क्लेरा, इसके ऊपर क्या है? एक लुब्रिकेशन है, इसके ऊपर भी म्यूकस है, टीयर है. ठीक है. तो इन सब के वजह से एंटीरियर पार्ट इज प्रोटेक्टेड. लेकिन जो अंदर का कंपोनेंट है आई का, इसके बाद जो तुम्हारा रेटिना बना, वहां से जो ऑप्टिक नर्व बन रहा है, तो जो नर्व है वो तो नोज के लेटरल वॉल पे ही रहता है. ठीक है. तो वो तो डायरेक्ट उन टेम्परेचर कंडीशंस के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी ये साइनसेस इंपॉर्टेंट है. इथमॉइडल साइनस जो है, जो पोस्टीरियर इथमॉइड है, वो इतना वाइडर एरिया प्रोवाइड कर देता है कि नोज का मतलब एंटीरियरली जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में एयर जा रहा है, मान लो किसी दिन 50 डिग्री हो गया, अभी तो कल या परसों दिल्ली में 52 53 हो गया था, मतलब हाफ बॉइलिंग वाटर, उतना तेज अगर जाएगा उस नर्व के ऊपर डायरेक्ट, तो क्या होगा? उसका हाफ फ्राई हो जाएगा. ठीक है. तो इसीलिए उनके टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, वेरिएशंस को मिनिमाइज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पैरानेजल साइनस का. ठीक है. सो एयर कंडीशनिंग, वोकल रेजोनेंस, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड ऑर्बिट फ्रॉम ट्रॉमा, म्यूकोसिलियरी एक्शन, ठीक है, स्कल के वेट को रिड्यूस करने के लिए, एंड इंट्रानेजल प्रेशर वेरिएशंस को मेंटेन करने के लिए. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव ऑलरेडी सेड. This one, sinus are emptied of air during inspiration and filled with air during expiration. Reverse of the how the lungs work. ठीक है. अच्छा, सर ने तुम लोग को फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के बारे में बताया है? नेजल सर्जरी का कोई क्लास हुआ है? फेस के बारे में कुछ बताया है? हुआ था. तो the short term is FES, FESS, functional endoscopic sinus surgery. तो why it is called functional? endoscopic sinus surgery समझ में आ रहा है, लेकिन why the term functional? functional का मतलब है कि we are giving ultra importance to this, the drainage pathway. क्योंकि नोज एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जस्ट इमेजिन कि ये साइनस है, ये मैक्सिलरी साइनस है, इसका ऑस्टियम यहाँ पे है, एंटी ग्रेविटी, ये पूरा एरिया साइनस का है, इसका ऑस्टियम यहाँ पे है, मतलब इस साइनस में जितने सिक्रीशन कलेक्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं, वो ऊपर चढ़ के नोज में जाएगा, फिर वहां से ड्रेन होगा नेजोफेरिंग्स में. तो ये एंटी ग्रेविटी है.
ठीक है, तो ये जाएगा कैसे? ये जाएगा म्यूकोसिलियरी एक्शन की वजह से। तो अगर हम सर्जरी के दौरान उस म्यूकोसाई को डैमेज कर दें तो क्या होगा? नहीं जा पाएगा। तो कलेक्शन कहाँ होगा? मैक्सिलरी साइनस के अंदर ही होगा। मैक्सिलरी साइनोसाइटिस के लिए हमने ओटी किया, बट द कंडीशन इज नॉट रिजॉल्व और वर्सन हो गया, ये भी हो सकता है। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ हाउ द ड्रेनेज सिस्टम वर्क्स and plan our surgeries accordingly. That is why the term functional endoscopic sinus surgery. ठीक है, तो अब maxillary sinus जो है, जितने भी sinuses हैं, सबसे ज़्यादा most common sinus to get infected is maxillary sinus. The reason behind is कि उसका जो drainage pathway है that is anti gravity. तो अगर थोड़ा सा भी inflammatory process के वजह से म्यूकोसिलियरी फंक्शन जो एक्शन है वो हैम्पर हुआ, तो द मोस्ट कॉमन साइनस दैट विल गेट अफेक्टेड इज मैक्सिलरी साइनस। सो ब्रॉडली आउटलाइन बता देता हूँ। मैक्सिलरी साइनस में सुप्रोमीडियली उसका ऑस्टिया होता है, ठीक? जैसे एक ये साइनस है ट्रायंगुलर, एक ये साइनस है, दोनों का ऑस्टिया सुप्रोमीडियली जाके नोज में खुल रहा है, ठीक? तो जो सीलियरी मोशन है वो उसके फ्लोर से सिक्रीशंस को उठा के नोज में डंप कर रहे हैं, ठीक? अब मैक्सिलरी साइनस के दो ओपनिंग्स होती हैं, मतलब एक तो कंफर्म होता है दैट इज द नेचुरल ओपनिंग एंड वन अनदर ओपनिंग माइट बी प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेसरी ऑस्टिया। हो सकता है सर ने बताया हो, ये दोनों इनफंडिबुलम में खुलते हैं, ठीक? तो आइडिया ये है कि ड्यूरिंग सर्जरी मतलब जितना भी ये सिक्रीशन है ये सारा प्राइमरी जो नेचुरल ऑस्टिया है उसके थ्रू जाता है, एक्सेसरी ऑस्टिया के थ्रू नहीं जाता है, ठीक है? एंड सेकंड है कि जब हम ऑस्टिया को एनलार्ज कर रहे हैं, अगर मान लो मैक्सिलरी साइनस का ड्रेनेज हैम्पर्ड है एंड ड्यूरिंग सर्जरी वी आर ट्राइंग टू जस्ट एनलार्ज द ओपनिंग, तो हम अगर गलती से एक्सेसरी ऑस्टिया को बड़ा कर दें और जो नेचुरल ऑस्टिया है उसको जैसा था वैसा ही छोड़ दें, क्योंकि दो अलग अलग ऑस्टिया हैं, हमने इसको लोकलाइज नहीं किया, सोचा कि यही मेन वाला है, इसको बड़ा कर दिया, तो क्या होगा? रीसर्कुलेशन होगा, मतलब डिस्चार्ज निकला, मतलब जो सिक्रीशन से नेचुरल ऑस्टिया से निकला और इससे अंदर चला गया, यही होता रहेगा। तो वो भी एक कॉज ऑफ डिजीज परसिस्टेंस हो जाएगा इवन आफ्टर सर्जरी, ठीक है? तो ये हो गया मैक्सिलरी साइनस का। उसके बाद इथमॉइड साइनस जो है वो मिडिल मीएटस में ड्रेन करेगा एंटीरियरली, एंटीरियर इथमॉइड्स। पोस्टीरियर इथमॉइड जो है सुपीरियर मीएटस में ड्रेन करेगा। स्फिनॉइड साइनस जो है वो स्फिनोइथमॉइडल रीसिस में ड्रेन करेगा। फ्रंटल साइनस कहाँ करेगा? मिडिल मीएटस में करेगा। फ्रंटल साइनस इंपॉर्टेंट उसका जो सिलियरी मोशन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसका सिलियरी मोशन होता है कि ये इंटरफ्रंटल सेप्टम होता है, उस सेप्टम के अलोंग करता है, मतलब राइट साइड का एंटी क्लॉकवाइज करेगा और लेफ्ट साइड का क्लॉकवाइज करेगा, मतलब सेप्टम के अलोंग जाएगा इस तरीके से, और वो मूव करके फ्रंटल ऑस्टिया में जाएगा, वहां से फ्रंटल रीसिस में जाएगा, फिर वहां से मिडिल मीएटस में जाएगा, ठीक है? अब ये सारा कलेक्शन चला गया मिडिल मीएटस एंड सुपीरियर मीएटस में, मान लो। उसके बाद क्या? तो मिडिल मीएटस से जो सिक्रीशन है वो और पोस्टीरियरली जाएगा, जो यूस्टेशियन ट्यूब का ओपनिंग है, ठीक, लेटरल नेसोफेरिंक्स में है, उसके एंटीरियर एक गटर बनता है, उसके पोस्टीरियर एक गटर बनता है। तो ये जो जितने भी मिडिल मीएटस वाले सिक्रीशन है वो एंटीरियर गटर से फ्लो होके ओरोफेरिंक्स में चले जाएंगे, वहां से हम उसको स्वॉलो कर लेंगे, और जो सुपीरियर से आ रहा है पोस्टीरियर इथमॉइड्स एंड स्फिनोइथमॉइडल रीसिस से, वो वाला पोस्टीरियर गटर के अलोंग होके Scabies is a basically it is a highly infectious or highly contagious disease. It is caused by the gravid female mite Sarcoptes scabies. Gravid female mite Sarcoptes scabies. So scabies is a sporadic, highly sporadic condition caused by the infestation with the host-specific mite caused by Sarcoptes scabies var hominis. Sarcoptes scabies. Spelling ta dekhe nao.
Sarcoptes cavi, Sarcoptes cavi var hominis, which lives its entire life within the epidermis. That is the uppermost layer of the epidermis known as stratum corneum. It rests in the entire life within the stratum corneum of the epidermis. It is a highly pruritic condition and a highly contagious disease. That means it can spread from the one person to another person easily. So, what are the predisposing factors for the development? That is the poor socioeconomic condition, that is the poverty, overcrowded condition, and the poor personal hygiene. All these conditions predispose to the development of the disease. So, disease is most commonly found in the hostels, old age homes, particularly in the slum areas. This type of disease is more common. So, particularly poverty, overcrowded condition, and inadequate hygiene. Inadequate poverty, overcrowded condition, and inadequate personal hygiene. All these conditions predispose to the development of the disease. Now, the route of transmission, how it is transmitted. Scabies is mostly transmitted by the close personal contact from the one person to the another person. Most importantly, the one person to another person, or maybe sexual route, or indirectly via the fomites. That means use of the contaminated towels, contaminated clothing, contaminated bedsheet. It can be transmitted indirectly. So, it can be transmitted via the close personal contact from the one person to another person, or via the sexual route, or indirectly via the fomites. Indirectly also via the fomites. Now, the pathogenesis. As I have already told, it is caused by the gravid female mite Sarcoptes cavi, which is usually an oval-shaped mite, and it has 4 pairs of legs with dorsal spines. It is usually present in the stratum corneum, that is the uppermost layer of the epidermis. So, host-specific mite Sarcoptes cavis causes the human scabies. The entire 30 day of the life cycle of the mite is completed within the epidermis, and each day the female mite usually lays approximately 2 to 3 eggs within the epidermis, and from the eggs to entire life adult mite development, it usually takes 10 to 12 days. From the eggs, within 2 to 3 days, it produces the larva. Larva is almost similar to the adult mite except the 3 pairs of legs. Adult mite has the 4 pairs of legs, and from the larva it goes to the protonyms and tritonyms, and finally it produces the adult mite, and usually it takes 10 to 12 days to produce the adult mite. So, the entire life cycle in 30-day life cycle mite is completed within the epidermis, and each day female approximately lays 2 to 3 eggs, which require approximately 10 days to mature, and the number of the mite which lives on the host can vary greatly. But most of the cases, the number of the mites are usually 10 to 12 or 10 to 15 or 2 to 10. But why this so severe pruritus or severe itching occurs? It is because of the hypersensitivity reaction. It is because of the delayed hypersensitivity reaction which produces this type of severe itching. So, the number of the mite is most important. Sometimes asked in the Viva exam, number of the mites is mostly 10 to 15 mites. There are 10 to 15 mites, but because of the severe hypersensitivity reaction, it produces the severe itching. Most important thing. And the incubation period. Incubation period varies greatly and depends from the days to month. It usually takes 2 weeks to 6 weeks, but approximately 3 weeks to develop the incubation period. But after the first exposure, when the person is first exposed, then subsequent exposure, it takes usually 24 to 48 hours. The incubation period means that is the entry of the organism and development of the signs and symptoms, the development of the itching. Usually takes 2 to 6 weeks, approximately 3 weeks time to get the incubation period. So, it usually 2 to 6 weeks, but most of the cases it is 3 weeks, and for the subsequent infestation or second infestation, it usually recognized within 24 to 48 hours, which is the most important thing. So, after the entry of the adult mite to the producers, the female mite usually lays eggs, and eggs to larva to protonym, tritonym, and ultimately mature adult worm. It usually takes 10 to 12 days, and this way it usually produces the eggs and life cycle is completed. Now, the clinical features. How the disease presents. The most important clinical feature is the pruritus, which is exacerbated at night. That is, the nocturnal pruritus is the hallmark of the disease. Nocturnal pruritus. That is the generalized itching, which is most severe in the night, is the most common presentation. And the pruritus is the common among the household family members. That means the pruritus is very much common as it is a highly contagious disease. So, pruritus is also found among the household family members also. If you take the history properly, the people will tell that more or less all the family members are affected due to the disease is highly contagious. And now, the distribution of the lesion, how the lesions are distributed. The lesions are the pruritic, usually the pruritic papular lesion, mostly distributed bilaterally symmetrical over the waves of the finger, flexural aspect of the wrist, back of the elbow,
axilla, around the nipple and breast, around the umbilicus, lower abdomen, genitalia and buttock, and it produces an imaginary circle called the circle of Hebra. Imaginary circle called the circle of Hebra. It is a very important, the distribution of the lesion. That is the waves of the finger, flexural aspect of the wrist, back of the elbow, axilla, around the nipple areola complex, around umbilicus, lower abdomen, genitalia and also the buttock, produces an imaginary circle called the circle of the Hebra. It is mostly distributed in the adult patient. Now, in the men, the penile and the scrotal lesions are common. That is, genital lesions are mostly involved. In the woman, the areola, nipple and the vulvar areas are often affected. In the female, the areola, nipple and the vulval areas are often affected by the disease. Now, the most important, but in case of the infants and the small children, entire cutaneous body surface area can be affected. In the infant and the small children, the entire cutaneous body surface area can be affected. That means it can affecting the scalp, it can affecting the face and also the palm and sole, which is not found in the adult. In the adult scabies, you will not found the lesions over the face or the scalp or the hands or the foot, but in the palm or the foot. But in the infants, usually the lesions are present over the entire cutaneous surface, including the palms, soles and the scalp, which is the distinguished feature. But in the adult scabies, as I have already mentioned, the distribution is mostly, as I have already mentioned, that the imaginary circle called the circle of Hebra, this pattern. The pathognomonic sign is the barrow, which is the most important thing. The pathognomonic sign is the barrow. What is barrow? Barrow is nothing but is a tortuous line which is present over the stratum corneum of the epidermis, in which the female mite lays the eggs. And the pathognomonic sign is the barrow, which representing the tunnel that a female mite excavates while laying the eggs. The pathognomonic, most of the cases it is not found because of the excoriaceous mark, because of the secondary infection, most of the cases are not found. Usually the distribution of lesions are most important. As I have already explained, the distribution of the lesions, that is the waves of the finger, flexural aspect of the wrist, axilla, areola, umbilicus, lower abdomen, genitalia and the buttock. And mostly it is a pruritic papular lesion. In some of the cases, the papulovesicles or the secondary eczematization can occur. But the most commonly lesions are pruritic papular excoriated lesions, which is the most important. And the most important pathognomonic sign is the barrow. Most important sign is the barrow, which representing the tunnel when a female mite excavates while laying eggs. Now coming to the clinical variants. What are the clinical variants of the scabies? There are many clinical variants, but most two clinical variants are found. That is, one is the nodular scabies. Which is the nodular scabies? It is a persistent pruritic nodular lesion, usually 5 to 8 millimeter in size, most commonly found in the genital region and also in the axilla. Indicates the intense hypersensitivity reaction to the mite and its product. Indicate the intense hypersensitivity reaction to the mite and its product. So, this is also known as the nodular scabies. It is the persistent pruritic nodule, 5 to 8 millimeter in size, chiefly on the genitalia, may be found on the axillary region and the groin also. This is the nodular scabies. And now the Norwegian scabies, also known as crusted scabies. This may come as a short note, Norwegian scabies or crusted scabies. What is Norwegian scabies? It is the widespread scaly crusted lesion, also involving the face and scalp, commonly found in the immunocompromised person, in which the immunity is very poor, immunocompromised person. It can also be found in the neurological disorders also, like the Down syndrome, adult T-cell leukemia, Hansen's disease, that is leprosy, mostly in lepromatous leprosy, and also the HIV positive present, and organ transplantations. This is mostly found. It is mostly found in the neurological disorder, that is the Down syndrome, organ transplantation, adult T-cell leukemia, lepromatous leprosy, and HIV positive cases. Mostly found in the immunocompromised patient, in which the immunity is very poor, and the tip of the fingers are swollen. There will be sublingual debris, and also the hyperkeratotic lesions are found in the finger. Nails are usually distorted and crusted, and sublingual debris is very much common in the nail. And itching, which is the hallmark of the scabies, hallmark of the disease. But here the itching is minimal or absent. This is very important. Here the itching is minimal or absent because of the immunocompromised nature of the host. Itching is very minimal, but it contains the thousands of mites or more than thousands of mites. As I have already told, scabies usually in a healthy adult
usually the number of the mites are few, 10 to 12 or 10 to 15. But in the Norwegian scabies or crusted scabies, there are more than thousands of mites, and so it is highly infectious disease, highly contagious disease. So crusted scabies is highly infectious and can trigger the epidemics of the scabies, particularly in the institution or old age home. It is a highly, please remember the two things. One is the itching is minimal or absent, and it is highly contagious disease, highly infectious disease, and can trigger the epidemics of the scabies, So Norwegian scabies is mainly found in the immunocompromised person. Here in this case, the scalp can be involved and there is extensive scaling and casting lesion over the hands. Nails are usually distorted, subungual debris is found and the fingers are swollen, and most of the cases it is found in the immunocompromised person. Here itching is very minimal or itching sometime absent, but as the number of the mites are huge, it is highly contagious disease and it can easily produce the epidemics of the disease, epidemics of the scabies. Now the picture. This is the, as you see, this is the pruritic lesion commonly distributed over the webs of the finger. That is the webs of the finger with some excoriation marks, pruritic lesion. So what is papular lesion? What is papule? Can anybody tell what is papule? Papules are usually elevated skin lesion with size less than 0.5 centimeter or less than 5 millimeter, elevated skin lesion. This is usually the papules. You can see the papules. This is usually the papules. This is usually classical distribution is found in the webs of the fingers, One, also this is one pustules is there. This is a pus filled lesion. One pustule is also there. This is usually found in the webs of the finger. Papular lesions are distributed on the webs of the finger. This is the classical lesion of the scabies, classically found in the scabies. Now, this is the, as I have already told, in male, the genital involvement is common. You can see the genital involvement. One, scabitic nodules, 2 or 3 scabitic nodules are found in the scrotum also. This is the intense hypersensitivity reaction to the mite or its product. This is also, but the scabies involving the penile and the scrotal involvement. Now come as the infant. This is a very important picture. In infant, the palms and sole and the face can be involved. In infant, palms and sole can be involved. This is the lesion of the infant. The palmar involvement. Palmar involvement is found in the infantile scabies. In infantile scabies, palm can also be involved. And now the crusted scabies. You can see the crusted scabies, as I already told. This is the immunocompromised person. Extensive crust formation is found. Extensive crusting of the disease. Extensive crust formation with the finger. You can see the palm. Extensive crust. This is a patient of the lepromatous leprosy with the clawing of hand, lepromatous leprosy with the development of the crusted scabies, also known as the Norwegian scabies. Now the diagnosis. How it can be diagnosed? Scabies is mainly diagnosed by the history and specific clinical distribution of the lesion. History, that is the nocturnal pruritus and family history positive, itching among the family members. Nocturnal pruritus and itching among the family members, which is the hallmark of the disease. Number 1. And distribution of the lesion, as I have already told, that is a pruritic papular lesion, mostly distributed on the webs of the finger, flexural aspect of the wrist, back of the elbow, axilla, nipple areola compress, umbilicus, lower abdomen, genitalia and the buttock. So the distribution of the lesion. If you see the distribution of the lesion with extensive itching and family history positive with nocturnal itching, this is the hallmark. This is enough to diagnose the scabies. Usually no laboratory investigation is required. But still, one is the distribution of the lesion, morphology, as I have already told, and burrows are pathognomonic. But most of the cases, burrows are not seen because of the excoriation mark, secondary bacterial infection, papules and pustule. Burrows are usually not seen. But if you get the burrows, this is the hallmark. But how to detect the burrow? If you, for detection of the burrow, some Indian ink or Jensen violets are put over the lesion, particularly over the webs of finger, and it is usually washed with alcohol. The thread-like burrow will retain the ink. Thread-like burrow will retain the ink. This is the important. You can put Jensen violet or the Indian ink over the lesion and usually whipped with alcohol. Thread-like burrow will retain the ink if burrows are present. Number 2 is the nocturnal pruritus. Nocturnal is pruritus in the night and contact cases, that is the family history positivity. Family history positivity, as I have already told, is a highly contagious disease. So the family history positivity is the most important. And the skin biopsy only in the inflammatory or nodular lesion. Skin biopsy is hardly required, usually not required, only in the inflammatory or the nodular scabies. And diagnostic feature is mostly the skin scraping with KOH mount and the microscopic study of the skin scraping for detection of the mite, eggs or the skybala. What is skybala? That is the fecal matter of the mite.
This is the fecal matter of the mite is known as the sky bala. You can microscopic study of the skin scraping can detecting the mites, eggs or sky bala, mites, eggs or sky bala. And now the skin biopsy, as I have already told, is hardly required. Only in suspicious cases where the diagnosis is in dilemma, you can do the skin biopsy, but it is not required. Most of the cases, the distribution of the lesion, extensive severe pruritus, exacerbated at night, family history, positivity, this is enough for the diagnosis of the scabies. Usually no laboratory investigation is needed. And now the treatment. How will you treat the patient? This is most important. The treatment of the scabies. It is also important. It is not only important in dermatology, also important in medicine wards and pediatrics ward and everywhere. It is important. How will you treat a patient? First of all, the drug, topical medicine. Permethrin 5% cream. Please remember, permethrin 5% cream. It is considered to be the drug of choice. It is considered to be the drug of choice in scabies. It inhibits the voltage-gated sodium channel in the arthropod neuron, thereby causing the paralysis of the neuron, It inhibits the voltage-gated sodium channel in the arthropod neuron, thereby causing the paralysis of the neuron. And how to apply it? The cream is applied from the neck to toe over the entire cutaneous surface, particularly over the webs of finger, umbilicus, entire surface. And it is usually, the application is done at night. And after 10 to 12 hours, it is usually washed with the soap and water. Except in the infant. In infant, it is applied from the head to toe application, sparing the periocular and the perioral area. And should be kept for 10 to 12 hours. In the next morning, it is washed with the soap and water. And most important thing is that all the family members must be treated together with permethrin 5% cream, whether symptom present or not, whether itching present or not. All the family members should be treated together. This is most important thing. All the family members must be treated together with permethrin 5% cream from the neck to toe application. So most important thing is the application, that is the neck to toe application of the entire cutaneous surface. Everywhere, not most of the cases, people usually do the wrong that they applied the lesion only over the lesions only. This is wrong practice. You have to apply it over the entire surface from the neck to toe. In the night and after 10 to 12 hours in the morning, it has to be washed with the soap and water, and all the family members should be treated together. This is the most important thing. Except in the infant, that is the whose age is below 1 year, it has to be applied from the head to toe application, sparing the perioc, and then the wash is again thing. And most of the cases, the family members should be treated together, and all the clothes, bed sheet, towel should be washed with the hot water. All clothes, sheet, towel should be washed with the hot water, because the mites can be present in the used bed sheet, towels, and it can be spread by the fomites also, as I have already mentioned. The permethrin is safe in the pregnancy, lactating mother and infant more than 2 months of age. The cream is safe in the pregnancy, lactating mother and infant more than 2 months of age. Adverse reactions are usually rare. Usually mild, brief stinging reaction can occur, but it is usually very short period. Usually the adverse reaction is not present. Adverse reaction is very mild, and most of the cases, usually the tolerance, most of the resistance does not develop to the permethrin cream. But the permethrin is still considered to be the drug of choice, and most of the cases it is usually given. So the other topical drug, which can be given for the treatment of the scabies? Number one is the linden or gamma benzene hexachloride. Previously, it was used 1% cream or lotion formulation, but due to the CNS toxicity, it can produce the seizure, because it can easily absorb through the abrated skin, and it can produce the CNS toxicity, particularly seizure. So it is better to avoid the skin, particularly more commonly found in the premature infants, or particularly, so it can produce the CNS toxicity. Very important. It is contraindicated in the premature infant, individual with the clustered cavities, and potential toxicity, relatively poor efficacy, and widespread resistance develop. As I have already done, the resistance still not develop with permethrin, but resistance develop with linden or gamma benzene hexachloride. That is why, due to the development of the resistance, poor efficacy, due to side effect, due to CNS toxicity, it should not be used. Previously used, but nowadays it is not used commonly. So linden is inferior treatment of choice. Number two is the crotamitone, 10% lotion or cream. Crotamitone is applied overnight from the neck to toe from 3 to 5 days. From the 3 to 5 continuous days, then it is washed off. It is a good antipruritic effect. But the most important side effect is the irritant contact dermatitis. It can produce the ICD, irritant contact dermatitis. So it is better to avoid it also. Efficacy is also poor, and it can produce the irritant contact dermatitis. Now the most important thing is sulfur ointment. 5 to 10% sulfur in a petrolatum base. Some books it is written 2 to 10% sulfur ointment in a petrolatum base. Applied in 3 consecutive overnight. That means 3 consecutive days. Say for example, Sunday, Monday, Tuesday, and then it is washed off in the after the third application. After the third application, it is usually washed off. But the most important thing is the sulfur is messy.
malodorous, and irritating to the skin. Sulfur is messy, malodorous, and irritating to the skin, and it can stain the clothing also. Sulfur is highly messy, highly irritating, and it can stain the clothing also. That is why sulfur is not used. But still, sulfur can be used in pregnancy because it is a category B drug. Sulfur can be used in pregnancy, but due to the better choice of drug, as I have already told, permethrin is usually entirely safe in the pregnancy. It is a category B drug, and it usually permethrin absorption is very minimal and rapidly detoxified, usually does not produce any harm to the baby. That is why permethrin is preferred over the sulfur ointment, and sulfur is not found as a commercial preparation. It has to be prepared by the pharmacist. This is the most important drawback. One is the prepared by the pharmacist, and second one is the messy, malodorous, and irritating to the skin, and it can stain the clothing. This is the most important thing. That's why it should be avoided. And now the oral drug. Which is the oral drug for the scabies? Only except oral drug is the ivermectin. Please remember the name, ivermectin. Ivermectin is the drug which can be used for the treatment of the scabies as an oral drug. It acts by blocking the transmission across the nerve sinuses that utilizes the glutamate or GABA. And causes the paralysis of the peripheral motor function of the neuron. Peripheral motor function of the neurons of the mite. Therefore, causes the death of the mite. So, its most important thing is that it blocks the transmission across the peripheral that utilizes the GABA or glutamate. It causes the paralysis of the peripheral motor function in the insect. Paralyzes the peripheral motor function. It causes the paralysis of the mites. It can cause the paralysis of the mite. The dose is usually 200 microgram per kg body weight, 200 microgram per kg body weight on the day 1, and can be repeated after 1 or 2 weeks interval. That is, second dose can be given at the day 8 or day 14. But the ivermectin is still one of the oral drug which can be given. Particularly, ivermectin is given in the treatment of the crusted cavities. In crusted cavities, you can give the oral ivermectin and topical permethrin simultaneously. You have to give in crusted cavities, you have to give the topical permethrin as I have already told, that is neck to toe application in the single night and repeat application after 7 days, and oral ivermectin can be given. Number 1. So, in crusted type of scabies, ivermectin should be used in conjunction with the topical agent, that is permethrin 5% cream. Ivermectin appears to have the good safety margin. It can produce as some neurotoxicity. It can produce as the neurotoxicity, particularly premature infant. Those age is below 5 years and weight is below 15 kg. It can produce as the neurotoxicity, particularly in whose the blood-brain barrier is not properly developed. Usually, the glutamate and GABAs are found in the human brain, and ivermectin does not cause the blood-brain barrier. So, it does not produce as any harm to the particularly human. But in the premature infants or premature person, particularly whose weight is below 15 kg, ivermectin can produce as the neurological disease, particularly seizure can occur. So, although it has a good safety margin, it can produce as the neurotoxicity is possible. Ivermectin should not be used in the infant, on children weighing less than 15 kg or the lactating mother. It should not be used in the lactating mother, and also it is unsafe drug in pregnancy. Adequate safety data is not available. It is a pregnancy category C drug. So, it should not be used in the pregnancy, breastfeeding mother or infant weighing less than 15 kg. It should not be used. But ivermectin still can be used in type crusted scabies or Norwegian scabies. So, in Norwegian scabies, you have to give the topical permethrin cream along with ivermectin together, and you have to also ask the patient to cut short the nails as the subungual debris are also present, and all the bedsheet clothes should be washed properly. This is most important thing. And now the supportive treatment for scabies. What are the supportive treatment? That means antihistamines for pruritus. We can give the antihistamine, that is the levocetirizine, cetirizine or hydroxyzine. These tablets can be given for relief of the pruritus. Antibiotic if the secondary bacterial infection present. Scabies infection is most commonly associated with secondary bacterial infection due to excoriation mass, due to the as the skin barrier is affected, there is high chance of development of secondary bacterial infection. Most commonly streptococcal pyogenes or staphylococcus infection is common. So, there is if the secondary bacterial infection is present, you have to give the antibiotic. Most commonly, the first generation cephalosporin or amoxicillin clavulanic acid is given. The most important thing, the antibiotic you have to give if secondary bacterial infection is present. So, one is the antihistamines for treatment of pruritus, and second one is the antibiotic if secondary bacterial infection is present. And number 3 is all the clothes, bed sheet, towels, etc. must be washed properly with hot water, because it can be transmitted via the fomites also. This is the most important thing. Now, the complication of scabies. What are the complications of the scabies? Complication, as I have already told, the secondary bacterial infections are very much common in scabies, particularly streptococcus pyogenes or staphylococcus aureus infection. This is very much common in scabies. So, it can produce as the impetigo, bullous impetigo, furunculosis,
cellulitis are very much common. In neglected cases, septicemia can develop also. In neglected cases, septicemia can also develop also. This is very important. And now, number 2 is the post-streptococcal glomerulonephritis. Post-streptococcal glomerulonephritis. Post-streptococcal glomerulonephritis, which is very much common in the children also. If not properly, if the infection is not properly managed, it can lead to development of the post-streptococcal glomerulonephritis. And third one is the eczematization. Eczematous changes, that is scabies dermatitis or eczematous changes can also occur. Eczematous changes can also develop. This is the most important thing. So, one most thing I am repeating, the most important thing is that it is caused by the gravid female mite Sarcoptes scabies. Gravid female mite Sarcoptes scabies. One of the important thing is the nocturnal itching, that is the itching which is exacerbated at night. With family history of the itching is the most important thing to be remembered. Number 2 is the distribution of the lesion. How the lesions are distributed. As I have already told in adult, that is the waves of the finger, flexural aspect of the wrist, back of the elbow, axilla, around the umbilicus, genitalia and the buttock. Produce an imaginary circle known as the circle of Hebra. That is the pleuritic papular lesion, number 1. Number 2 is the treatment. Treatment purpose is the most important. Permethrin 5% is the drug of choice. Permethrin 5% is the drug of choice. It has to be applied from the neck to toe in the entire one night, and it has to be washed properly with soap and water 10 to 12 the next morning. The repeat application is done after 1 week. This is important. Repeat application is done. This repeat application is done after 1 week, because if any larvae or if any particularly eggs are present, it can be destroyed, and also the reinfestation is possible through via the fomites or the bed sheets, and this can be destroyed by the repeat application. So, repeat application is done after 1 week. Only 2 applications. One is the stat application. After that, after 7-day application can be done. This is the most important thing to remember. And now, the most important thing is the complications of the scabies. One complication is the secondary bacterial infection, that is streptococcal infection or staphylococcus infection, and it can lead to the, if the complication is present, patient will complain with pain. Patient will complain, along with itching, patient will complain with pain. And if you see the pustules are present with some impetiginous lesion with pain, you will always that is the secondary infection is present. Along with the antiscabitic drug, antihistamine, you have to prescribe antibiotic. This is the most important thing. So, secondary complication of the scabies is very important. You can ask the complication also. And if you can tell the 2 complications, that is one is the superated bacterial infection, streptococcal infection and staphylococcal infection, impetigo, bullous impetigo and post-streptococcal glomerulonephritis. This is enough for your standard. You have, don't say about the eczematization or other complications. Just 2 complications are enough. Number 1. Our main kotha hoche je all the family members should be treated together and nails should be cut short, and sometimes the crust are so severe, that is the salicylic acid with petrolatum base can be applied. This is the most important thing. But you have to treat all the family members together. Repeated application of permethrin sometimes needed in crusted scabies. That means you can apply permethrin at weekly interval, or 2 or 3 interval permethrin can be given for crusted scabies.